Ultimately, everyone is working towards driving change. In public policy, you are driving change via government, non-profits or for-profits. In political consulting, you are driving change via political parties, MPs, MLAs or other candidates. Hi everyone, I hope you are doing well. My name is Akshat, I am a co-founder at Rebounds. Today I'm tackling another topic which I've answered in hundreds of one-on-one conversations with people who I have talked with in the last 1.5 months, which is public policy or political consulting. Which stream, which career to pick for a good or reasonable plan B. Okay. So there are many people I've talked with who are confused between what to pick as part of their plan B. Should they go into public policy? Should they go into political consulting? Which one offers more stable career opportunities? Which one offer good career paths which are sustainable in future, career paths where the probability or the potential of earnings are high. So ये सब सवाल मैं वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस में अभी तक maybe hundreds of times I have answered this. So I decided to create this video just to record the answer to this question once and for all for each one of you. Okay. So I would start by saying that let's keep it simple, guys. Keep it simple. It's not that difficult a problem where we should be splitting hairs around. It is a very simple, problem or question to answer. Think about it like this from a very simple fundamental perspective. Just think about it like this. What do you do in public policy? Again, just to simplify things and make it easy for you to make a decision, I'm saying this. In public policy, you are driving change on the ground via three actors, primarily three actors, और कोई नहीं है, right? Either you will work with the government, आप सरकार के साथ काम कर सकते हैं as a young professional or in a particular fellowship. For example, many state governments come out with their fellowships like CMGGA for Haryana, Punjab Good Governance Fellowship, and there are others, right? Then there are YPs with young professional opportunities with central government ministries. You can do that. You'll be part of public policy and you will drive change. Another is you can work with non-profits in various capacities, be it in research, implementation, advocacy, or evaluation. You will drive change. Then you can also work with corporates. For example, for a long time, I have been working. I worked with corporates primarily in consulting, but non-consulting as well. Corporates hire policy professionals for various works to drive change. Okay, so three places you can work: government, non-profits, corporates. Sarkar, समाज, बाजार, एज दे से टू ड्राइव चेंज. अब इन तीनों जगह बहुत सारे टाइप के काम हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के लोगों के साथ काम हो सकता है या एजेंसीज के साथ काम हो सकता है, बट प्राइमरीली ये तीन जगह आप काम कर सकते हैं इन दी पब्लिक पॉलिसी स्पेस टू ड्राइव चेंज. सो अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकार के साथ, नॉन प्रॉफिट्स के साथ या फॉर प्रॉफिट्स के साथ काम करना है, देन पब्लिक पॉलिसी इज फॉर यू, राइट? अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. Similarly, in political consulting, you work with players like political parties, MPs, MLAs, as the name says, right? Political consulting. आप पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट कर सकते हैं, आप एमपीज या एमएलएस को कंसल्ट कर सकते हैं इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, और पीपल who are standing in an election or who are participating in an election, be it at the central government level or at the state government level or even at the lower level also, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं in various aspects of strategy, campaign, policy, governance, etc. to drive change, just to simplify things. Ultimately, everyone is working towards driving change. In public policy, you are driving change via government, non-profits or for-profits. In political consulting, you are driving change via political parties, MPs, MLAs or other candidates. Okay? Now, there are certain people जिनको पता होता है and they know they cannot be part of the politics in any shape and form, they don't identify with it, they don't like it, then political consulting might not be for you. There are other people who know for sure that look, I drive energy from politics, politics is my area of interest, I really like politics, other areas, non-profits, government, etc. is not my area of interest, then political consulting is for you, no questions asked. You can do absolutely brilliant both in terms of career stability, career progression, earning money when it comes to political consulting. But there is a third type or third type of people as well, and I, going by my interactions in the last 2.5, 3 years, this third type is the majority. This third type is, at this moment, as of now, आपको नहीं पता
कि आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं या पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहते हैं, आपको पॉलिटिक्स भी पसंद है, आपको सरकार के साथ काम करना भी पसंद आ सकता है, आपको नॉन प्रॉफिट के साथ काम करना भी पसंद आ सकता है, यू रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. Be open about it, go into market, apply to all type of roles, I would say. Of course, positioning, CV, etc. would be different. इतना अलग भी नहीं होगा, and I will talk about how. But broadly, if you are confused, apply for all type of roles. That is a simple solution which I would suggest. और अगर आपको दोनों के लिए भी अप्लाई नहीं करना, तो आप दोनों में जाना चाहते हैं वो ठीक है, बट एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का कोशिश कीजिए. अगर आप कर पाते हैं, वेल एंड गुड. इफ नॉट, देन ऑल्सो इट इज फाइन, यू अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ रोल्स. इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. उसका दूसरा रीजन ये भी है, व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल स्किल्स टू गेट इनटू एंड सक्सीड इन बोथ दीज एरियाज, देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप, बहुत ओवरलैप है गाइस. एंड ये पॉइंट हमने अपने बहुत वेबिनार्स में कवर किया है बहुत बार. पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो ये फंडामेंटल स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए टू लैंड अ रोल इन दी पब्लिक पॉलिसी स्पेस. वो क्या है? बेसिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक डेटा सोर्सेज, बेसिक एकेडमिक नॉलेज, राइट. इसके बारे में आपको दूसरे वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे ऑन हाउ टू गेट इनटू पब्लिक पॉलिसी स्टफ लाइक दैट. बट ऑल सेड एंड डन, दीज आर द फंडामेंटल स्किल्स. फंडामेंटल, बाकी भी चाहिए बट ये फंडामेंटल है. सिमिलरली पॉलिटिकल कंसल्टिंग में भी आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, इसमें भी काम में आता है. दो चीज़ें अलग हैं, इतनी अलग भी नहीं है. एक है पॉलिटिकल, गुड पॉलिटिकल एक्यूमेन ऑफ कोर्स विच इज नीडेड, दिस इज पॉलिटिकल कंसल्टिंग. अनदर इज डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन. ये फंडामेंटल स्किल्स है गाइस, राइट. तो आपने देख लिया दोनों तरफ काफ़ी सारे ओवरलैप्स हैं. दोनों में क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग आना चाहिए आपको, प्रेजेंटेशन मेकिंग आना चाहिए, एंड टू सम एक्सटेंट डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन आना चाहिए. यही कारण है क्योंकि बहुत ओवरलैप्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं ये दोनों एरिया, उसमें कोई डाउट नहीं है. काम अलग होता है, स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं, बट फ्रॉम अ हार्ड स्किल पर्सपेक्टिव काफ़ी ओवरलैप है. इसलिए अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इट्स ऑल राइट, यू कैन बी ओपन फॉर बोथ रोल्स, प्रिपेयर 2 टाइप ऑफ सीवीज, विच इज फाइन. गो फॉर देम, अप्लाई फॉर देम, गेट इनटू वन विदाउट एनी फियर. बिकॉज आप एक में जाते हैं, लेट से आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग में जाते हैं, 1 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, एंड यू थिंक दैट लुक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझे नहीं जम रहा है फॉर वट एवर रीजन, राइट. यू कैन ऑलवेज स्विच टू द अदर एरिया. स्टार्टिंग में 1 से 5 साल तक स्विच करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेल इन द मार्केट, दिस स्विच इज वेरी मच पॉसिबल. सो ऐसा नहीं है, आपको ये माइंडसेट नहीं लेना है कि आप एक एरिया में चले गए तो आप दूसरे एरिया में नहीं जा पाएंगे. ऐसा नहीं, आप जा सकते हैं, 1 साल बाद भी जा सकते हैं, 2 साल बाद भी जा सकते हैं, 5 साल बाद भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट प्रॉब्लम आएगा अगर आप इसी कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे कि ये करें या ये करें या ये करें, और उसके चक्कर में आप एक भी नहीं कर पाएंगे. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इफ यू पिक वन, if it doesn't work out, you can move to the other one. That is absolutely possible. But because you are unable to decide between one of the two, do not delay your entry into the market, guys. Okay, understood? That is why we within Rebounds also offer a program where you can explore both these areas in terms of upskilling projects, etc., and get to know more about these so that you can make a call. And again, as I said, many people in Rebounds have done it. People have themselves kept open for both type of roles. They apply for one, they get into it, and trust me, pivoting is possible for reasons because a lot of skills are transferable, a lot of knowledge is transferable, and various other things. Okay, so guys, do not fear. If you are confused, that's okay, go for both. But going by my explanation of what is it in public policy, political consulting, if you are able to make a call, that is good. But if not, that's also good. Just move forward. That is the most important thing. Thank you so much, guys. Hope this was useful.